Now we're going to start with the first question. The question says there's a list of techniques for separation. From the list, choose the most suitable technique. The butane from a mixture of propane and butane. Both of them are gases. So how would you separate the two gases? Of any idea? Fractional distillation. I said two gases, and let me open the notes as well. I said remember two gases. Fractional distillation is a possibility, but the best one is because if they have different boiling points, the best one is diffusion. ठीक है यहाँ I think before chromatography we had done that. That I said that diffusion is usually used to separate gases. You can see this in front of your screen. Why is it used? It's because heavy Okay. diffuse slowly, light gases diffuse fast. So अगर एक pipe के अंदर ना gases are traveling, so the light gas will travel faster. So you'll that will reach the other end very quickly. ठीक है, clear enough है? Yes, sir. So two gases. That's going to be diffusion. The next one is oxygen from liquid air. Fractional. Okay, this one is fractional distillation. The next one is water from aqueous magnesium sulfate, but it's a salt. Think of it as a salt solution, aqueous magnesium sulfate, and you have to extract water from. Uh, Crystallization. The crystallization के अंदर, if I had wanted to extract the crystals of magnesium sulfate, then I would have used crystallization. I want to extract water, not the crystals. तो कौन सा तरीका होगा? The method for that is, Distillation. हाँ ठीक है, Distillation. it would be simple distillation, not fractional, but simple. Simple distillation gets Oh, extract, the salt remains behind, the water gets to the other end. So in this case, it's going to be simple distillation. As anyways, potassium, you're extracting the salt from aqueous potassium chloride. Acha, the reason, acha, remember, whenever you see aqueous, ka matlab hai, it has dissolved. It's a soluble solute. And I gave you a data sheet as well. Uh, yes, sir. ठीक है, now the purpose of the data sheet was keep that data sheet. It's for your entire एक सेकंड मैं उसको खोल भी लेता हूँ कि what's in the data sheet. These are all the things that you have to remember. इसके अंदर ions की list है, acids की list है, और their names and their formulas. वो बारी बारी करेंगे, so but you have to remember all of these. Bases actually, now this one was important, solubility of salts. ठीक है, जैसा potassium chloride है. Remember कि if there's a salt of group 1, NH4 plus one, anything that has NH4 or group 1 or nitrate in it, that salt is going to be soluble. So, इसके अंदर ना separation techniques के अंदर you need to know which substances are soluble. So in this question, he was asking for potassium chloride. Group 1 salts are all soluble. So soluble salt, this one would be crystallization. ठीक है? If you want to extract the salt. Next one is silver chloride from a mixture of silver chloride and water. Now the question is silver chloride soluble or not? Uh, so we're going to look and we're going to try and figure this out whether silver chloride is soluble. So have a look at the data sheet. Where's the data sheet? And look at the chlorides. Chlorides के बारे में क्या लिखा हुआ है? It says all chlorides are soluble except all chlorides are soluble except silver chloride, the one with silver. That उसका कलर ठीक है. PPT का मतलब है PPT is precipitate. It's a short for precipitate. It simply means solid को कहते हैं. ठीक है. A suspended solid in a जैसा sand and water. So sand would be a PPT, a precipitate. Clearly, silver chloride is not soluble. So chlorides जब भी आएंगे ना, Yes, you have to remember this. All chlorides are soluble except in दो के silver and lead. वो soluble नहीं है. ठीक है. They are not soluble. So it's insoluble. तो किसका निकालोगे?
Filtration. Yeah, this one would simply be. As the next one, glucose from a mixture of. How do you separate glucose and maltose? Glucose is solid, I think. अच्छा, इसका मैं वैसे आइडिया दे दूं कि एंड के अंदर ना हमने किया था सेपरेशन टेक्निक्स में वी डिड क्रोमेटोग्राफी. रिमेंबर क्रोमेटोग्राफी is specifically used to extract. It's not extract. You're not able to extract anything from chromatography. Separate करते हो. Remember separation और extraction में फर्क है. मतलब ये पेपर के ऊपर अगर आपके पास वो इंक सेपरेट हो जाती है उसका ये मतलब ये वो इंक आपको मिल गई है. तो ये यू नॉट इट्स नॉट एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक, इट्स अ सेपरेशन टेक्निक. बस आपने सेपरेट कर दिया, वो आपको मिली नहीं है, रेड इंक उसके ऊपर चिपकी हुई है. नाउ chromatography was to separate dyes, but other than that, chromatography was also used to separate a lot of other things like dyes, amino acids, glucose. These were also used to separate things. ठीक है? Clear है? Yes, sir. So then you have there's another thing. Where's the paper? So this one would be chromatography. Remember this कि biological substances की separation जो है ना, that's usually done with chromatography. Amino acids, glucose, ये सारी चीजें. अच्छा ये आसान होगा फिर. Water extract करना copper sulfate में. First thing, is it soluble or insoluble? Copper sulfate, ठीक है? So open the data sheet, go and look for sulfates. Sulfates कहाँ लिखा हुआ है? ये second पे लिखा हुआ है कि all sulfates, ठीक है, it's written over here. So it says all sulfates salts are, इसको रब कर दें, उसके ऊपर ही लिखती है. अच्छा, so it says all sulfate salts are soluble except PbSO4 and BaSO4 and partially CaSO4. तो all salts are soluble सिवाय इन तीन के. तो इसमें और भी है वैसे. ये शायद इतनी updated नहीं है. Silver sulfate is also insoluble. And there's strontium sulfate that's also insoluble. Other than these, all of them are soluble. तो ये कौन सा है? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट क्या होगा? सॉलेबल होगा. Soluble. तो कॉपर सल्फेट इज गोइंग टू बी सॉलेबल. तो सॉलेबल में से वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसा करोगे? Fractional distillation. नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन. Oh, yeah. क्या डिफरेंस है वैसे फ्रैक्शन मतलब when you use fraction, when do you use simple? So in fractional distillation, we heat it. It goes into the water cooler. In simple distillation, we only separate two solids and a liquid. ठीक है, मतलब वो सॉलिड मतलब उसमें एक ही लिक्विड होता है जो इवेपोरेट कर रहा होता है. सिंपल Yes. फ्रैक्शन में मल्टीपल लिक्विड होते हैं. अच्छा, helium from a mixture of helium and argon, both of them are gases. Diffusion. ठीक है, this one is next one, copper sulfate from aqueous copper sulfate. अब दोबारा सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करनी है. Then I think again simple distillation. नहीं, अब वाटर नहीं चाहिए, इसी पे तो मार्क्स कटेंगे So ना. now fractional, we will do fractional. नहीं, सॉल्ट चाहिए. सॉल्ट को कैसे निकालते हो? Filtration. वो तो फिल्ट्रेशन तब होती है अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट होती है, तभी हमने फिगर आउट किया सॉल्युबल सॉल्ट है. So it would be crystallization. क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है, मतलब उसके क्रिस्टल्स बनाओगे, इवेपोरेट करोगे, पानी को इवेपोरेट करोगे. अच्छा एथेनॉल. Okay. अच्छा एथेनॉल फ्रॉम एक्वस एथेनॉल, ये वाटर प्लस एथेनॉल है. एक्वस का मतलब है पानी भी है, तो दो लिक्विड्स हो गए. So then fractional. ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. एंड देन यू हैव बैरियम सल्फेट. बैरियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बैरियम सल्फेट. अब पहले जाके देखो बैरियम सल्फेट है क्या. बैरियम सल्फेट इज, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, BaSO4. ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल सिवाय इसके, तो ये सॉल्युबल नहीं है, तो इट्स एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस.
तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है? Filtration. ठीक है, this would be filtration. Next one is कि you're given a bunch of chemical bonding से ज़्यादा ताल्लुक है मैं। अच्छा ये बताओ कि अमाइनो एसिड्स की ना सेपरेशन हो रही है उसके ऊपर, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, क्रोमेटोग्राम इज बीइंग यूज्ड. Why do you need to spray it with a locating agent? So that it is easier to identify the acids. ठीक है, to make it visible. ये याद रखना कि अपार्ट फ्रॉम डाइज आपका जो क्रोमेटोग्राम होता है ना कि ये कलर ये लिखा हुआ भी यहाँ पे कि when you have colorless substances, locating agents are sprayed होना चाहिए था ये. Just one second. Locating agents are used कर लेते हैं to make them visible. So locating agents dyes के अंदर you don't have any need कि उसको spray करो, but for colorless substances you would have to do that. Then you have next one. Okay, how is it possible to identify the amino acids? How do you identify substances in a chromatogram? मतलब chromatogram है, how do you identify it? Well, what do you use? Someone? Dyes help us to find it out. Huh? Dyes help us to find it out. नहीं, ये लिखा हुआ है. You calculate the RF value. Every Okay, sir. RF value पता है ना क्या है? Yes. So every substance has a unique RF value. क्योंकि उनकी solubility different होती है. कुछ ज़्यादा travel करते हैं distance, कुछ कम करते हैं. इसमें ये है कि अच्छा इसमें ये कि RF value का ये कि it's unique. Most of the time it's unique. ज़रूरी नहीं है कि unique हो, but most of the time it is unique. तो calculate the RF value. उसका फॉर्मूला भी लिख दो. अच्छा, calculate RF value and match it with known samples. मतलब कोई सैंपल होगा जिसका पता होगा कि इसकी RF value ये है. अगर बायो लेते हो तो अमाइनो एसिड्स जो है ना वो होते हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में. बायो लेते हो? No, sir, I'm a computer. अच्छा, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं क्योंकि केमिस्ट्री इज लिंक्ड टू अच्छा केमिस्ट्री इज लिंक्ड टू बायोलॉजी और केमिस्ट्री इज प्रीटी मच वेरी कॉमन एंड वेरी सिमिलर. Just one second. अच्छा, so now you have 20 different amino acids. Amino acids से ना आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है? ये हम इनमें जाकर ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे भी. All our cells or मतलब our skin, every structure in the human body, okay, that's made from an amino acid. Except for the skeletal structure, वो कैल्शियम का बना होता है. कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं. तो मतलब आपकी टीथ और आपकी जो बोन्स है ना उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है ना सेल का, कोई भी मसल का, that's made from amino acids that are joined up together. तो अमाइनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स के. तो हमें हर किसी की आरएफ वैल्यू पहले से पता होगी. तो हमारे जो सैंपल होगा ना जिसके ऊपर हम क्रोमेटोग्राफी कर रहे होंगे उसकी आरएफ वैल्यू आएगी. किसी अमाइनो एसिड की आरएफ वैल्यू 0.2 है, किसी की 0.3 है. तो हमें हमने सारों की कैलकुलेट की है, हमारे पास टेबल्स हैं. वी नो द आरएफ वैल्यूज ऑफ ईच वन. तो we can always match with them, ठीक है? अच्छा, next one, you're given 3 boiling points. उससे क्या suggest how the ammonia could be separated from the mixture. How would you separate ammonia from this mixture?
Rafi, what would you do? Sir, I think chromatography, Different boiling points दिए हुए. fractional distillation, Fractional. This distillation, 30. That's one. अच्छा इनमें और उसके थोड़ा सा बता दो. They have different boiling points. Fractional distillation is used. So at minus 33 degrees centigrade, ammonia would change into gas and will be collected. The next one, most helium combustion. Okay, most helium from natural gas found in USA. Natural gas contains methane. Methane जो होता है ना वो CH4 होता है. तो आगे जाके पता भी लग जाएगा methane. उसे natural gas contains methane and 7% helium. तो इसका मतलब 93% जो gas है ना that's methane, that the gas that comes into your home, and 7% is helium. So he's saying one possible way to obtain the helium would be to burn the methane. To get rid of the methane, you get helium. That's it. So the first part of the question is, equation को छोड़ दो. The first part of the question states suggests why this would not be a suitable method to obtain the helium. Well, why common sense use go 1 mark? Why would it be not a suitable method to obtain the helium? sir, some burning would occur also. नहीं क्या होगा? I think burning will occur or some hazardous substances may burn out, like CH4 would burn out. एक तो वो है कि it's wasting of resources. मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि आपके घर में हीटर में गैस आ रही है, उसको जला दो, पीछे हीलियम रह जाएगा. तो मतलब वो why do you want to waste a natural resource? तो it's wasting resources. ठीक है. Plus burning would also produce greenhouse gases. Greenhouse gases and causes global warming. As anyway, so that's not a good way. Another method, how would you separate two gases? Di- diffusion. Okay, diffusion would work. Next is, okay, chromatogram is given. Why it was necessary to spray the? It was sprayed with bromomethyl blue. Why was it necessary to spray? ये किस चीज की क्रोमेटोग्राफी हो रही है? प्लांट एसिड्स का. क्यों स्प्रे करते हैं? But what do you think bromomethyl blue is? Plant maybe. Well, basically simple chromatography is because what do you basically spray? You spray locating agents. Locating agents such as ninhydrin for amino acids, they are sprayed क्योंकि वो नजर नहीं आएंगे ना, or they might have they might be completely colorless. So to make them visible. Yes, sir. अच्छा, anyways, explain what is meant by the term RF value. RF value की definition क्या होगी और formula क्या होगा RF value का? Simply क्या होता है? The distance of dye divided by distance of solvent. ठीक है, distance of solvent. That's it. Then you have
उसी का सैंपल उसकी RF वैल्यू पहले निकालो जाके सैंपल 1 और सैंपल 2 की by looking at the diagram. Let me go back and have a look at the diagram. Look at this diagram. इस पे RF value of sample 1. How would you calculate this? मैं उसे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ लेकिन वो या तो रूलर से मेजर कर लो या सिंपल बॉक्सेस काउंट कर लो ये कितने हैं 10 और ये 11 बॉक्सेस हैं 11, तो डिस्टेंस ट्रैवल 11 बॉक्सेस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट कितने हैं इट्स 2 23. नहीं 50 बॉक्सेस है ना मतलब मुझे नहीं पता कि कितना क्लियर नजर आ रहा है दिस इज 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स एंड 5 बिग बॉक्सेस Yes, और हर yes, बॉक्स sir. है तो टोटल क्या हो गया 50 51. अच्छा तो ये कितना बनेगा व्हाट इज 11 over 50 इज इट 0.22 Yes, it is 0.22. अच्छा इसका बताओ इसका क्या होगा ये 20 प्लस कितना है ये 20 It's 23. तो 23 out of 50 Yes, it would be 0.49. or 6 ठीक है Yes, तो 0.22 और 0.46 0.22 और 0.22 अच्छा 8 इज कौन सा है पहला वाला 0.22 tartaric acid और 0.46 uh, yes, malic acid. malic acid अच्छा how do you figure out a substance is pure When it melts and boils at a constant temperature, 100 degrees Celsius. ठीक है so check melting ये कौन सा पॉइंट है melting point so melting point Yes. so I'm just going to check the melting point so result of pure melts at exactly 135 degrees centigrade that's it अच्छा then this one अच्छा do you know what brass is it a mixture or a compound or an element I think compounds, sir. पता है ब्रास के मतलब पढ़ा तो होगा वैसे ब्रास किन दो चीजों से बनता है what is brass made from it's Alloys, copper, copper and plus zinc. ठीक है copper plus And zinc zinc. लेकिन मिक्सचर होता है it's not a chemical composition it's just a mixture ठीक है Okay. ठीक है मिक्सचर होता है when they're not chemically combined कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ what is it So it's also a mixture. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड होते हैं या बस मिक्स हुए होते हैं Chemical compound. Obviously. this would be a compound right clear है Yeah. Yes, sir. अच्छा और कॉपर क्या है मतलब कॉपर is simply an element मतलब it's And element. ठीक है मतलब it's mixture क्या होता है not chemically combined but different substances mixed together compound is different substances mixed together but they are chemically combined resulting in something totally different ठीक है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर बन जाता है तो वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बहुत डिफरेंट है अच्छा which physical property is used to distinguish between metal and चलो इसको छोड़ो मेटल और नॉन मेटल में कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है Sir, they are shiny in appearance or they are dull in appearance in non-metal. चलो ये वाला अच्छा देयर इज अ वर्ड हाइड्रोकार्बन ठीक है कॉमन सेंस यूज करो उसको हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड व्हिच नाम से नजर आ रहा है क्या होगा इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या होगा जस्ट फोकस ऑन द नेम Sir, hydrogen and carbon atoms. ठीक है व्हिच कंटेन्स
hydrogen and carbon atoms, right? Explain what is meant by the term fractional distillation. तो पहली चीज तो आप किसको separate करते हो? What do you separate in fractional distillation? What type of compounds? Point number one. There are two mixtures of aqueous water. नहीं वो जरूरी है water होगा. Separation of miscible liquids होता है. Yes. या miscible liquids का word miscible use करना है. Miscible liquids का मतलब होता है liquids that mix with each other. क्योंकि अगर वो mix नहीं करते तो फिर कोई जरूरत नहीं है इसकी. If you have two liquids which don't mix like oil and water, तो decanting होता है. वो या तो ऊपर से निकालो ऑयल को या नीचे से ये सेपरेटिंग फनल यूज करते हुए नीचे से वो खोलो तो वाटर निकल आएगा बाहर. ठीक है. So you use decanting when the liquids are not miscible. Miscible का मतलब mix होना है. ठीक है. And how are they separated? Or why are they separated? मतलब क्या difference That होता they are separated by heating to a certain temperature when the mixture will vaporize. है? लेकिन separate होने की reason क्या है? So can you repeat the question? What? मतलब why do they कौन सी property है जिसकी basis के ऊपर वो separate होते हैं? They get separated because they have Heating was different boiling points. क्लियर है. एक पहले बॉईल कर जाता है एक बाद में बॉईल करता है. इज दिस क्लियर? yes, sir. अच्छा फिर दिस वन यू सम ऑफ द फ्रैक्शंस obtained from petroleum are given below. ये पेट्रोलियम का हमने सारा किया था. ठीक है. कि सेपरेशन वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहता है. इफ यू गो बैक एंड हैव अ लुक तो यहाँ पे हमने लिखा भी था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आई टोल्ड यू कि ऑयल जो जमीन से निकलता है ना दैट्स ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स जिसमें गैसोलीन गाड़ी का पेट्रोल डीजल ट्रक का पेट्रोल पैराफिन एयरप्लेन का फ्यूल ships का fuel. ठीक है. lubricating oils etc. You had all these different things. ये ऊपर वैसे ये वाले यूजेस तो नेट के लिखे हैं. ये मैंने वो कैम्ब्रिज वाले लिखे हैं ऊपर ना. अच्छा एनीवेज एवरी फ्रैक्शन हैड अ डिफरेंट वो चिमनी के ऊपर पास करते हैं उसको हीट करने के बाद तो वेपर जो होता है वो ऐसे सब ठंडा होना शुरू हो जाता है. एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस दे कंडेंस फर्स्ट. तो कोई भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा वो जल्दी कंडेंस कर जाएगा. एंड यू गोइंग टू ऑब्टेन देम ऑन दीस ट्रेस बिलो. And substances that have low boiling points, they would condense when the mixture gets cooled more. फिर वो eventually रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. कुछ सब्सटेंसेज होंगे वो गैस वो कंडेंस ही नहीं करेंगे. सारी गैसेज होती हैं. मीथेन गैस कंडेंस ही नहीं करती रूम टेम्परेचर पे एटलीस्ट. So this is fractional distillation. Separation is done due to differences in boiling points. Now उसने uses पूछे हैं. uses क्या है इसके कि बिटुमेन किस में यूज होता है? रोड्स बनाने में. लुब्रिकेटिंग Making roads. कार वैक्सेस. ठीक है. पॉलिशेस वगैरह बनती हैं उससे. पैराफिन जो है दैट्स एयरप्लेन फ्यूल. एंड देन यू हैव गैसोलीन व्हिच इज द Uh, वो कार्स के अंदर. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट इज ये उसी तरह का क्वेश्चन है. सॉलिड फ्यूल. जल्दी से बताओ कोई सॉलिड फ्यूल. जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. सॉलिड फ्यूल. एनीथिंग कम्स टू माइंड. वो कौन सी चीज़ है सॉलिड है जिसको तुम जलाते हो? the coal. ठीक है. कोल. गैसेस फॉसिल फ्यूल. वुड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो जमीन से निकालते हो आप. गैसेस कौन सा घरों में कौन सी गैस आ रही होती है? Methane. ठीक है. दैट्स मीथेन. अच्छा नेम टू लिक्विड फ्यूल्स.
obtained from petroleum, ये भी हमने पूरी लिस्ट लिखी है, उसमें कोई भी बता दो. लिक्विड फ्यूल्स कौन से? ट्रक्स क्या यूज करते हैं? उसको देख भी लो वो. डीजल इज अ लिक्विड फ्यूल. Yes. ठीक है. केरोसिन And gasoline. Gasoline. गैसोलीन कर लो कार्स के अंदर. नेम टू अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स obtained from petroleum that are not used as fuels. तो एक तो वो बिटुमेन हो गया रोड्स के लिए. और क्या है which is not used as fuels? वो Lubrication. yeah, lubricating fraction. Lubrication fraction. So then you give another mixture of liquids that is separated on an industrial scale by a fractional distillation. Do you know of any other thing? Although you probably right now don't know any other thing that's कोई पढ़ा ही नहीं अभी, वो भी बाद में जाके पढ़ना है, लेकिन एयर को सेपरेट करते हैं जो ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह नहीं होते जो हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं. आ, Yes, sir. तो वो सारी अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड नाइट्रोजन वो आजकल आइसक्रीम्स के अंदर भी और खाने पीने के अंदर काफ़ी काफ़ी इन हुई है. लिक्विड नाइट्रोजन. Yes. That's also उसके बगैर वो YouTube पे वीडियोस भी बड़ी उसकी. So that is also frequently used, extracted from air. एयर का पता है कॉम्पोजिशन क्या है? Although बाद में जाके पढ़ेंगे भी, लेकिन this is something that you should know. क्या कॉम्पोजिशन है? कि 78% ऑलमोस्ट 80% यानी तकरीबन सारी की सारी एयर आपके इर्द गिर्द विच यू आर ब्रीदिंग इन इज नाइट्रोजन. उसके अंदर सिर्फ आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट 1 मॉलिक्यूल इज जस्ट ऑक्सीजन. तो Okay, sir. I mean, basically, technically, we're not breathing in oxygen, we're actually breathing in nitrogen. But nitrogen inert होता है, it's very inert and it doesn't really do anything. मतलब नाइट्रोजन का कभी रिएक्शन बहुत कम सुना होगा कि जी हर चीज़ ना हमारे सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है. So the active component in air is oxygen. Oxygen is the one that's reacting with everything. ठीक है. बर्न भी कोई कर रही है, हर चीज़ ऑक्सीजन ही कर रही है. चल ठीक है राफे, we'll continue with this. Probably कोशिश करेंगे सैटरडे को क्लास होगी. ठीक है. Okay, sir. Sir, can you send the questions for this? हाँ ये मैं भेज रहा हूँ. ठीक है. Okay, sir. Thank you. Last